तो क्वेश्चन लिखिए फिर। लिंग्विस्टिक थ्योरी में बहुत साल पहले सवाल पूछा गया है, 2010 का क्वेश्चन कर लीजिए। आर नेसेसरी प्रोपोजिशंस लिंग्विस्टिक बाय नेचर, डिस्कस द इन लाइट ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। स्टार्ट राइटिंग। आई एम गिविंग 10 minutes। चलिए। Are necessary proposition linguistic by nature? Are necessary proposition linguistic by nature? Discuss the light of discuss in the light of discuss in the light of logical positivism. 2010. सो बहुत सालों से पेंडिंग है, मे बी नेक्स्ट ईयर लॉजिकल पॉजिटिविज्म का यही सवाल आ जाए। ठीक है। सो लॉजिकल positivists are forced to propound linguistic theory of necessary proposition because of one of the following reasons: being empiricists, the foundation of their the foundation of their knowledge accepts only empirical slash synthetic statements, which lack necessity or certainty. The empiricism school ended up in skepticism of Hume. Additionally, subjective experiential knowledge requires an objective foundation as its base. So, in order to accommodate necessary propositions, या ऐसा लिखिए, once it becomes necessary to accept necessary propositions, it now requires how to explain their validity within the framework of empiricism. It would be one of the three choices
one of the two choices. Either to accept necessary propositions are based on empiricism as done by Mill, or to accept necessary propositions are based on reason. Iyer rejects both the choices because in first, it is not logical, while the second is not consistent with empiricism. Therefore, Iyer propounds a third view, that necessary propositions are linguistic in nature, while all knowledge originates in experience. On the question of their validity, those statements whose validity requires experience are called synthetic statements. Second, while those statements which can be validated simply by meaning of the sentence are necessary or analytical propositions. Therefore, Iyer concludes with linguistic theory of necessary proposition, and while agreeing with Kant's distinction, Iyer criticizes Kant for giving psychological explanation. However, Quine, a radical empiricist, refutes Iyer in his first dogma of empiricism, where he demonstrates that necessary propositions like
all bachelors are unmarried male also require experience for validation, while IAS successful defense of linguistic theory of necessary proposition may be a subject of debate, but in itself it definitely sounds, yeah, if in itself it is undeniably sound. So this is the answer. Okay. Now it took so much time and I gave so much time to this because all except few, 2 3 people, 5 people, everybody has a doubt in linguistic theory of necessary proposition. अब इस आंसर में किसी को कोई प्रॉब्लम? यस? नो सर। कुछ मैंने लिखा नहीं है, सिंपली आई हैव जस्ट कॉपी पेस्टेड द नोट्स. सर इतना फ्लो में आंसर आया ना ये, तो हाँ, अब इतना इतनी फ्लो में आया है, उसका कारण देख लीजिए. इतनी तो कंसेप्चुअल नहीं क्लैरिटी फ्लो नहीं में थी का उसमें। नोट्स है, मैंने सिर्फ नोट्स छापा है. 3 रीजंस इसी फॉर्म में लिखवाया गया है. कंपैरिजन विद कांट, क्वाइंस क्रिटिसिज्म, कंक्लूजन. दिस इज सिंपली, दिस इज व्हाट हैज बीन डिलीवर्ड इन द क्लास नोट्स. उसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया विथ सम माइनर मॉडिफिकेशंस. सो 3 रीजन है और उसके बाद उनको एकोमोडेट, पहले तो उनको नेसेसरी प्रपोजिशन क्यों देना था वो बात कर ली. फिर उसके बाद हमने बात की व्हाई दे वांट टू एकोमोडेट within the framework of how they want to accommodate, either through Mill's view or the second view that it is based on language. I have supported the second view. उसके बाद comparison with Kant, Quine's criticism, conclusion खत्म. तो क्वेश्चन लिखिए फिर. लिंग्विस्टिक थ्योरी में बहुत साल पहले सवाल पूछा गया है